Namaste, Khushamdeed, good evening, a very warm and very wet uh, monsoon evening to all of you. And this episode is very special, not for single reason, for many reasons. The reasons which are there for special episode, I will tell you later. But most importantly, we are doing a series which is the Doctor's Day special week, which are doing this week. That is why I'm here on a Tuesday rather than Wednesday, which I meet you every Wednesday on Wednesdays with Vinny Kantru. You're watching Dr. KK's Med Talks, and this is 694th episode which we are into today. We all know how this all legacy started with Dr. Kk Agarwal taking the lead, and we salute him for all these episodes, for which he is the main reason that we all meet on every day and discuss something important regarding the medical knowledge. I am here to tell you few things about Dr. Kk Agarwal, which is obviously very less as compared to the personality he was. Dr. Kk Agarwal dedicated his whole life to what he called the dharma of a doctor. He had been closely involved with the evolution of modern healthcare in India and strongly advocated universal healthcare. Fondly remembered as the doctor with the stethoscope, he dedicated his whole life towards medical knowledge and imparting various educative programs through this series, which we are trying to carry on. Dr. Kk Agarwal began his professional journey at the Moolchand Hospital in New Delhi in 1983, where he pioneered clot dissolving streptokinase therapy along with Dr. Colonel K.L. Chopra for the first time in the country in 1984. Dr. Agarwal was very active in the Indian Medical Association and dedicated his whole time there for the welfare of doctors and medical profession in his capacity initially as the chairman of IMA Academy of Medical Specialties, which was in 2006 and 2007, National Honorary Finance Secretary, which was in 2007 and 2008, Senior National Vice President IMA 2013 and 14, and then the Honorary Secretary General, which was 2002 to 2016, and last but not the least, as the National President in 2017 to 2018. He was a strong advocate for the rights and respect of all doctors across the country. He was the immediate past president of Confederation of Medical Associations in Asia and Oceania, having served in the distinguished position from 2019 to 2021. He was honored with four national awards: the Padma Shri in 2010, Dr. B.C. Roy National Award in 2005, Vishwa Hindi Samman in 2015, and the National Science Communication Award in 2015. He dedicated whole of his life towards medical education and treating all the patients. We salute all his duties and his valor which he has shown towards the medical profession. Unfortunately, we lost him in 2021 for COVID. We had lost many people, including other medical doctors, during the COVID 19 second wave, especially which was the Delta wave, which was very devastating. We all salute him, and wherever he is, I pray that he is very happy there in his space. All of us are trying to carry out this legacy, and in this series today, I am here on a Tuesday to discuss on a very special topic, which I'm sure everybody is going to be interested in. It is regarding the skin health, which we will come to later on. But let's go to the headlines of the day. The Sanofi has launched a global health brand with non profit treatments.
Now, we will have certain treatments from Sanofi which will not be making any profits and will be dedicated towards the welfare of the society. Chennai has made masks mandatory in public places again as the COVID 19 cases are on the rise again. India had reported about 16,000 new cases and 24 deaths in the last 24 hours, which is way ahead of what we were reporting the last week. A survey showed that 64% of the Indians are comfortable in taking only 2 doses of COVID 19 vaccine, and they may not be interested in the precautionary dose. But through this medium, I urge everybody who has not taken a precautionary dose, especially people with comorbidities, people who have decreased immunity due to any kind of diseases, which includes a chronic kidney disease, they are on immunosuppressive therapy, they have any history of cancer, or somehow they have suffered from a disease which was very, very long standing and may have caused an alteration in their immunity, they are the ones who should be taking the precautionary dose right ahead. In a research, it was observed that new face masks will be developed which will kill the COVID virus itself on the mask. Now we have to see how this will happen, but there could be certain kind of medications or chemicals which can be incorporated into the mask and which will kill the COVID 19 vaccine. We do not have these specialized masks at the moment in India, but certainly we have certain things which is known as the COVID appropriate behavior, which is certainly going to prevent you from acquiring any kind of newer variants and COVID 19 infection. We, of course, are seeing a rise in the number of COVID 19 cases. Fortunately, the cases are not very, very severe, but still, if you are immunocompromised, you should be the ones who are going to get the precautionary dose at once. And I urge all of you to please follow COVID appropriate behavior. Now, let me come to the interesting conversation and the interesting part of this program. Let me introduce the guest today. Our guest today is Dr. Anil Ganju. Good evening, Dr. Ganju. Good evening, Dr. Vinny. So nice to be with you on this channel. Very, very happy to have you here because you are a distinguished doctor yourself, and it is our pleasure that you have spared your very, very important and busy moments to have a chat with us here this evening. And secondly, also you are a dermatologist, so it's going to be all the more important and very, very interesting for our female folks because we all are interested in knowing what makes our skin very, very glowing. Sure, I'll try to come up to your expectations. But at the outset, let me pay my regards to Dr. Kk Agarwal. I had the privilege of being associated with that great person, and he used to very frequently call me up for these talk shows because he used to do these when he was around before COVID. He was always on the run and doing all these shows, and I've been a part of number of initiatives that Dr. Kk Agarwal did. Salute to him, such a great person, and it's a huge loss to all of us. God bless his soul. Right. My guest today is Dr. Anil Ganju. Let me tell you some little bit things about him, although list is very long, but I have selected a few. He's a well-known name in the field of dermatology, dermatosurgery, and lasers with more than about 20 years experience in his field. He has been at the forefront of innovation in dermatology and has participated in several national and international research projects in the domain of aesthetic medicine. He has the rare honor of being visiting dermatologist to the former president of India, our beloved Dr. APJ Abdul Kalam. What a person he was. He's one of the celebrated faculties in the fields of laser and aesthetic dermatology and has also organized several conferences and courses in the field for budding dermatologists. Dr. Ganju
heads the Department of Dermatology at several prestigious hospitals in and around Delhi. Welcome to the show, Dr. Ganju. Thank you very much. So our topic for today is skin health, which is absolutely important. And considering that we live in a country which has sun almost throughout the year, I would say only during the winter months maybe the sun is not so harsh during those January, February, and March months. But rest of the year we do get in a lot of sunlight, which means that we have to take care of our skin health all the more. And also living in such a kind of pollution all over the country, all over India, we know that we not only cities but also villages which have high amounts of pollution. So this skin health is absolutely important. Now, if we want to know what is skin and what are its common functions, how do we define all these things, Dr. Ganju? Dr. Vinny, skin is the largest organ of the body. It has a very, very important, function of protecting the internal organs from the environmental insults, because this is the interface between the external environment and the inner body parts. That's the most important thing. So, skin has a very, very resilient barrier in it. It's not just a layer. It has, very, very complex components in the form of epidermis, which has further components within it. We have the dermis, we have the subcutis, we have the fat under it, then the musculoskeletal layer, and all. So, skin becomes a very important organ as far as protection of the internal organs is concerned. Then the most important part is the aesthetic part of it. The none of the organs is so important, because skin comes forth in any person's personality the first thing that the other person sees. So you want to have a skin which is healthy, which is good looking, which makes you presentable. So therefore it becomes extremely important organ of the body. Absolutely. So, are genes responsible for the skin health, or we do have any kind of environmental influences which are really important for the skin health? What is the contribution of genes, and what is the contribution of these external, amount of these pollutants and everything else which we encounter on a daily basis? You see, both are important. You are genetically predisposed to sun damage if your skin is not protected because of a number of factors, and the most important is the amount of pigment you have in your skin. So the more the pigment, the more you are protected from the sun. So we are blessed having the skins of color which are darker. They are not as prone to sun damage as the western skins, because they don't have much of pigment in their skin. So that's a blessing in disguise. Many people think, I wish I had a lighter skin like the western skin, but it's a blessing. And because of this, the environmental factors play different roles in different skins. For example, our skins are not as prone to skin cancers as the western skins are. Things like melanoma of the skin are very, very uncommon in our kinds of skins, quite common in the western skins. So aging is extremely common in the western skins than in our skins. So their skins wrinkle, become rough, become lots of pores developing, sag more than our skin. So an Indian skin at 40 would not be as aged as a western skin at 40. Their skins react to sun with erythema, redness, irritation, etc. immediately, while as our skins do not get too much of erythema and redness or sunburns. They get more of pigmentation. So our problem is pigmentation, their problem is aging. So yes, genetics have a role to play. The different races will react to the sun damage differently. So also to the other environmental factors like the pollution, etc. So genetics have a role to play. You are genetically predisposed to one kind of injury, and you are not predisposed to that kind of an injury in the same environmental factor.
बिल्कुल सही बोला आपने डॉक्टर गंजू। तो जब जब हम सोचते हैं कि हम थोड़े से सांवले हैं, तो अक्सर हमारे दिल में ये बात आती है कि वेस्टर्न स्किन जो है इतने गोरे-चिट्टे होते हैं। लेकिन आपने जैसे बताया कि स्किन के कैंसर्स काफ़ी कॉमन होते हैं वेस्टर्न स्किन में। ये बात मुझे तब पता चली जैसे आपने बताया कि वेस्टर्न स्किन बहुत प्रोन होता है इरिटेशन को, इरिडीमा को, रेडनेस या फिर कोई भी किस्म का जो हम फैब्रिक पहनते हैं उससे जो इरिटेशन होता है। तो जब भी मैं बाहर गई थी, जिस समय में मैं यूके में रहती थी, तो अचानक मेरी स्किन जो है काफ़ी सेंसिटिव हो गई, जो कि यहाँ भी था। या हम ऐसा कहें कि यहाँ इंडिया वालों की जो चमड़ी होती है काफ़ी मोटी होती है, जो कि एक हिसाब से काफ़ी अच्छा है। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मेरी स्किन काफ़ी इरिटेबल रहने लगी। छोटी-छोटी चीज़ों से वो बिल्कुल रेडनेस आने लगा, सन डैमेज ज़्यादा पता लगने लगा। तो कुछ चीज़ें ज़रूर है उस एनवायरनमेंट में या उनके पानी में जो अफ़ेक्ट करती है हमारे स्किन को। आज सवाल तो बहुत होंगे, हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जिसमें अनीता ददलानी जी गुड इवनिंग कह रही हैं, काम्या शारदा जिसमें डॉक्टर एनएस शारदा हमारे साथ जुड़े हैं और विनी जोगलेकर जी हैं, गुड इवनिंग बोल रहे हैं, स्वप्ना जैन जी हैं। आप सबको भी हमारी तरफ से गुड इवनिंग और डॉक्टर्स डे विश करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। सवाल बहुत सारे हैं डॉक्टर गंजू। सो कॉमन स्किन की जो एलिमेंट्स हैं या मोटे तौर पे जो हमारी कंट्री में डिजीज़ेज़ कॉमन है, व्हाट आर द कॉमनेस्ट स्किन डिजीज़ेज़ व्हिच यू एनकाउंटर इन योर इंटरैक्शन विद योर पेशेंट्स? You see, diseases related to age, adolescence, acne is one of the most common, problems that we come across because it concerns the important age group of adolescents. जो young होते हैं, they are more concerned about their, personality, the way they look, etc. So they come in more. Acne as such is common, and then this age group is more concerned also, so they come in more. Allergies are on the rise, so we see a lot of childhood eczemas, we see a lot of urticarias, particularly eczemas, quite common, becoming more common over the day. Infections are also quite common. We have bacterial viral infections coming in very commonly. And in this COVID era now, allergies are on the rise, so suddenly somebody will come with an allergy which was never known in that person, and then we take a history और पता चलता है कि इस पेशेंट को कोविड हो चुका है. हेयर की प्रॉब्लम्स बड़ी कॉमन हैं, एंड विद कोविड इट हैज़ ऑल्सो रिजन. लॉट्स ऑफ हेयर लॉस पेशेंट्स आ रहे हैं आजकल, and particularly after COVID, because of the stress of the disease, hair loss is very common. And then pigmentary disorders, people are very concerned about developing dark spots on their faces, झाइयाँ जिसको बोलते हैं, melasma, which is related to sometimes pregnancy, sometimes puberty, sometimes certain drugs and sun exposure, etc. So these are the common conditions that we see in day to day life. और over the time, क्योंकि लोगों में एक अवेयरनेस आ गई है, तो एजिंग के साथ काफ़ी कंसर्न होता है, एंड पीपल कम इन सेइंग कि डॉक्टर आई डोंट वांट टू एज, मेरे फेस पे अभी थोड़े रिंकल्स हैं, मैं इसको रोकना चाहती हूँ या रिवर्स करना चाहती हूँ. सो दैट सेगमेंट इज ऑल्सो ऑन द राइज. बहुत सारे पेशेंट ये कंप्लेंट्स लेकर लेकर भी आते हैं. And awareness itni बढ़ गई है कि sometimes people come without any complaints and say, I just want to take care of my skin, doctor. How do I take care of my skin? So the patient has no problem at all. Patient wants to just look good, keep the skin healthy, and know how to take care of the skin. जो कि बहुत अच्छा है। अगर किसी को एक प्रिवेंशन के तौर पे जिस तरीके से हम अपनी बाकी बॉडी का केयर करते हैं, तो स्किन का भी केयर करना बहुत-बहुत ज़रूरी और अनिवार्य है क्योंकि इसी से आपकी जो एक्सटर्नल ब्यूटी है या ओवरऑल मेंटल हेल्थ है, वो भी रिलेटेड होती है। तो अगर आप अपनी स्किन की केयर करते हैं, तो आप ओवरऑल हेल्दी फ़ील करेंगे। ये जो हमारे जो एक्ने की बात आपने कही, आपने सच बोला कि देयर इज़ अ लार्ज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी एट दैट पॉइंट ऑफ एज, दे डू गेट दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम एंड ऑल ऑफ अस बिकम कंसर्न्ड एट दैट पॉइंट इन time that these will leave some kind of scars or we have acne developing in one region, it is spreading to the other region. So what is the way to handle all these acne, because we know entirely it cannot be curved at that point of age when there are hormones
hormonal changes happening in the body. So, but what is the best way to tackle this acne? See, short of going to the doctor, like before reaching a doctor, a number of things that can be kept in mind and that can, take care of the acne to a large extent. One thing that is happening in our society these days is, the sedentary lifestyle that is coming in, and this has led to worsening of the hormonal changes that happen at puberty. So people put on weight, they are not exercising, they are on their computers, they are on their games, they are on their telephones all the time. Outdoor games have reduced considerably. So the children need to be told that it's extremely important to have a health lifestyle. The dietary pattern has also become very bad. Lots of ordering through Swiggy, Zomato, etc. Children are always 24/7 into this, and they order for all sorts of junk and all, which is extremely bad. So one thing that is very important that can be done before reaching a doctor is telling your children to maintain a healthy lifestyle, exercise, take proper food, lots of fluids, green vegetables, less of junk. Then acne gets aggravated if the face is not kept very clean. So you need to wash, although not wash excessively, wash with mild cleansers frequently, so that a lot of oil, lot of dirt, grime, etc. does not collect on the face, which can add to the development of acne. uh, Also, it is important that the skin does not get very dry also. So you need to use a light water based moisturizer which is not very sticky. So the children are to be told to use a moisturizer, but the moisturizer does not have to be very thick, sticky and heavy. And also, in this age group, there's usually a misconception that oil is very good for hair. So oil adds to the oil already that is causing acne on the face. So application of oil into the scalp is not a very good practice. That should be avoided in this age group, particularly if they have dandruff. So many a time लोग सोचते हैं कि डैंड्रफ है, ड्राइनेस है, इसके ऊपर ऑयल लगाओ तो ठीक होएगा, एंड पेरेंट्स आर यूजुअली टेकन अबैक जब हम उनको बोलते हैं कि नहीं ऑयल मत लगाइए, ऑयल की वजह से है. So it's very important to understand that oil applications can add to acne, oily food can add to acne. हाई ग्लाइसेमिक फूड जो होता है जिससे ग्लूकोज लेवल्स बढ़ती हैं बॉडी में, उन उन खानों से एक्ने बढ़ता है. सो ये सब चीज़ें अगर हम डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले ही करें तो शायद हमें डॉक्टर के पास पहुंचना ही ना पड़े. बट वंस यू आर विद द डॉक्टर, देन ऑफ कोर्स द डॉक्टर विल टेक केयर. जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि डाइटरी इन्फ्लुएंसेस, लाइफ़स्टाइल चेंजेस हर डिज़ीज़ में बहुत ही ज़रूरी और अनिवार्य हैं और इन सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ जो है कोमेडोन्स की प्रॉब्लम इस एज ग्रुप में काफ़ी कॉमन होती है, जो कि कंसर्न होता है अगर एक एरिया में कोमेडोन होते हैं, वाइट एलिवेशंस होते हैं, तो दूसरी जगह पे भी डेवलप करना शुरू कर देते हैं। क्या इसका कोई ख़ास कारण है? और आजकल मैंने देखा है कि जब हम मास्क पहनते हैं, तो उस एरिया में ज़रूर जो है ये कोमेडोन्स बनना बहुत कॉमन हो गया है। मेरे फेस पे पहले कोमेडोन्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन कांस्टेंट मास्क पहनने की वजह से उसी एरिया में जो है ये कोमेडोन्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? कॉमेडो देखो, एक्ने जो होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, और हमारे जो सबसे छोटे जिनमें ज़्यादा रेडनेस इन्फ्लेमेशन नहीं होती है उनको कोमेडोनल एक्ने बोलते हैं. वो दो किस्म के होते हैं, एक क्लोज कोमेडोन्स होते हैं जिनको वाइट हेड्स बोलते हैं, एक ओपन कोमेडोन्स होते हैं जिनको ब्लैक हेड्स बोलते हैं. यही फिर आगे जाके रेड पैप्यूल्स बनते हैं, जो दाने हम देखते हैं, इन्हीं में फिर पस पड़ सकता है तो पस्चूल हो गया, उसी को बड़ा हो गया तो सिस्ट बन सकता है. So ये सारे जो हैं, these are types of acne, and comedones are one form type of acne, the mildest, not the mildest, the least inflammatory. अगर हम कहें, they are not very mild, they can leave scars also. So yes, they are on the rise, particularly mask पहनने से, मास्क की वजह से जो हमारा लॉट ऑफ स्वेट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट बनता है बिहाइंड द मास्क, बिटवीन द मास्क एंड द स्किन, वो ऐड करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ एक्ने, कोमेडोन्स एक्सेट्रा, बिकॉज इट कॉजेज स्वेलिंग अप ऑफ द स्किन, द पोर्स गेट क्लॉग्ड, उनके अंदर फिर कलेक्शंस हो जाती हैं और कोमेडोन्स बनते हैं. तो दे आर कॉल्ड मास्कनी.
So this is a special term that has been given. So it has now become a well known identity that people come in with mask knee, which needs specific treatment. So इसके लिए जिन लोगों को एक्ने की टेंडेंसी हो और मास्क की वजह से एक्ने बढ़ रहे हो, they have to use a very light mask. The best would be a surgical mask, and surgical masks are almost as good as N95s, they say. There's a very marginal improvement in protection when you go from surgical mask to an N95. N95. N95 mask can induce much more acne than a surgical mask, because surgical mask is lighter. And then if that also causes a problem, then just a cotton cloth mask, all that gives protection but not as good as surgical mask. So light, and then they need to keep their face clean. So wash twice a day with a mild cleanser, sometimes moisturize a little if they're feeling dry, and if they need medication, then they need to see a doctor. कुछ सवाल ज़रूर हमारे पास आए हैं जो लोग पूछना चाह रहे हैं। एन शारदा जी पूछ रहे हैं, आई फाउंड विटफील्ड ऑइंटमेंट वेरी यूजफुल इन स्किन डिजीजेस, व्हाट इज योर एक्सपर्ट कमेंट? पुराने ज़मानों में जब हमारे पास इतने स्पेशलाइज्ड मेडिकेशंस नहीं अवेलेबल होते थे, तब ये फॉर्मुलेशंस बनाई जाती थी और स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ये यूज़फुल होते थे. बट you can't say that it is a blanket treatment for everything. For example, if you apply Whitfield ointment on acne, you will aggravate acne because it's an ointment base. But Whitfield ointment for fungal infections, for psoriatic skin, for dry skin is a good treatment, because it contains salicylic acid that causes removal of the thick hard skin. So it is useful in certain conditions. We still use it, and sometimes it comes, pharmaceutical companies banate hain Whitfield ointment. It is available now also, but then we have much better medications available, much aesthetically pleasing medications. It's important that the patient जो लगा रहा है उसको वो लगाना अच्छा लगना चाहिए. If he doesn't like to apply something, then he will probably not continue and adhere to the treatment. So we have much better treatments available. So that has become more or less obsolete. We are not using them now. राइट. इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, जैसे हमने एक्ने के बारे में बात करी, सुमन कुमार जी हमसे पूछ रहे हैं, क्या हाइपोथायरॉयडिज्म या फैटी लिवर से एक्ने एग्रीवेट हो सकता है या कॉज हो सकता है? जी हाँ, हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों से एक्ने एग्रेवेट हो सकता है, हेयर लॉस हो सकता है, स्किन में बहुत सारी चेंजेस हो सकती है. हाइपोथायरॉयडिज्म में स्किन जनरली ड्राई हो सकता है, यू डेवलप अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, इचिंग हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है. फैटी लिवर के साथ डायरेक्टली कोई एक्ने का रिलेशन नहीं है, बट थिंग्स दैट कॉज अ फैटी लिवर कैन बी अ पार्ट ऑफ the overall metabolic syndrome, जिसके साथ acne भी associated हो सकता है. Fatty liver per se causing acne, there's no direct relation, but things that cause fatty liver can cause acne also. So relation है एक indirect उसके साथ भी. जी. एन शारदा जी पूछ रहे हैं कि उन्हें कोविड वैक्सीनेशन के बाद जो है एक एलर्जिक रिएक्शन हुआ था, विच लास्टेड मोर देन 6 वीक्स. सो वैक्सीनेशन के बाद क्या हमने एलर्जिक रिएक्शन, जैसे हमने एलर्जी के बारे में बात कही, स्किन एलर्जीज भी ऑन द राइज हैं, स्पेशली ऑफ आफ्टर दिस कोविड फेज, तो किस तरीके की एलर्जीज हम स्किन में देख सकते हैं, या कोविड वैक्सीनेशन के बाद जिन लोगों को एलर्जीज हुई हैं वो किस तरीके की हो सकती हैं? कई प्रकार की एलर्जीज हैं. मोस्ट कॉमन तो अर्टिकेरिया, जो जिसको छपाकी बोलते हैं, दैट्स क्वाइट कॉमन. कोविड की वजह से भी होता है और कोविड वैक्सीन की वजह से भी होता है. फिर हमने देखा कि ऑलरेडी जो पेशेंट्स को एलर्जिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे सोराइसिस हो गया, जैसे विटिलाइगो हो गया, ये भी कोविड के बाद भी और वैक्सीनेशन के बाद भी बढ़ सकते हैं. तो इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड जो डिजीजेज हैं, जिनको हम जनरली एलर्जीज कहते हैं, दे डेफिनेटली आर ऑन द राइज. कोविड की वजह से भी उनको स्टिमुलस मिलता है और कोविड वैक्सीन की वजह से भी उनको स्टिमुलस मिलता है. ऐसा हो सकता है, बट दैट डजंट मीन दैट लोगों को कोविड वैक्सीन नहीं लेना है. सो मेनी टाइम्स पीपल से मेरे को एलर्जी होती है, शुड आई टेक, एंड दे फियर कि मैं नहीं लूंगा. द बेनिफिट ऑफ टेकिंग अ कोविड वैक्सीन इज मच 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 मोर than the risk of getting an allergy.
Allergy can be easily taken care of, but a severe COVID infection can be detrimental, like we have seen in our dear Dr. Kk Agarwal. दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट मैसेज। लोग अक्सर ये बोलते हैं कि हमने कोविड वैक्सीनेशन नहीं ली, आजकल के दौर में भी जब हमने इतनी प्रॉब्लम्स देखी है कोविड से, कि इसलिए हमने नहीं ली क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन से हमें डर लगता है। जैसे सर ने कहा, डॉक्टर गंजू हमें बता रहे हैं कि ये एलर्जीज़ माइल्ड तरीके की होती हैं, जिन्हें आसानी से टैकल किया जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर अगर कोविड का इन्फेक्शन सीवियर हो जाता है, तो उसको टैकल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कोविड की एक असरदार थेरेपी आज के दौर में भी हमारे पास नहीं है। सो प्लीज़ इस डर से कि आपको छोटी-मोटी एलर्जी स्किन में होगी, उस डर से वैक्सीनेशन अवॉइड ना करें। यदि आपने अपनी वैक्सीनेशन नहीं ली है, तो कोविड की वैक्सीनेशन ज़रूर और ज़रूर लें। सुरेश शुक्ला जी हमारे साथ हैं। लाइकन प्लैनस की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि उन्हें लाइकन प्लैनस है जिसके बारे में हम आपसे थोड़ा इलैबोरेट करके जानेंगे। और ये कह रहे हैं ऑलरेडी टैक्रोलिमस और स्टीरॉयड ले रहे हैं, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। क्या कोई रास्ता है इसे ठीक करने का? देखो, जो ये लाइकन प्लेनस है, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून मीन्स जब हमारी इम्यूनिटी डिरेंज हो जाती है और हमारी इम्यूनिटी अपने ही टिश्यूज़ के अगेंस्ट एक्ट करती है। लाइकन प्लेनस में कुछ सेल्स होते हैं स्किन में, एपिडर्मल सेल्स, जिनको डैमेज करती है जो हमारी इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून सेल्स हैं वो उनको डैमेज करते हैं। उस डैमेज की वजह से एक तो इन्फ्लेमेशन होती है, स्किन के अंदर दाने बनते हैं जो यूजुअली डार्क कलर के होते हैं, और अगर वो ठीक भी होते हैं वो दाग बहुत 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 देर तक रहते हैं, और ये एक रेकरेंट डिजीज़ होती है। बट जनरली एक अच्छी बात लाइकन प्लेनस के बारे में ये है कि ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, ज़्यादा देर नहीं चलता है, मे बी ईयर, 2 ईयर, 4-5 ईयर्स, यूजुअली इट्स अ सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर, उसके बाद चला जाता है। बट जब ये बहुत सिवियर होता है, उस समय हमें इसको ट्रीट करना ज़रूरी होता है, बिकॉज पेशेंट इज़ इन अ वेरी बैड स्टेट, इची स्टेट। पर्टिकुलरली अगर मुंह वगैरह में हो जाए, ओरल अल्सर्स हो जाते हैं, उस समय खाना वाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमें इसको काफ़ी एग्रेसिवली ट्रीट करना पड़ता है। इसका ट्रीटमेंट, हाँ, ओरल स्टीरॉयड्स होता है इनिशियली टू कंट्रोल द डिजीज़, और अगर हमें ज़्यादा देर तक स्टीरॉयड्स देने पड़े तो फिर हमारे पास स्टीरॉयड स्पेयरिंग ड्रग्स होते हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन है, एज़ाथाइप्रिन है, माइक्रोफिनलेट मॉर्फिटिल हैं। इनको हम यूज़ करते हैं और स्टीरॉयड से पेशेंट को लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट से बचाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस डिजीज़ को टैकल ही नहीं किया जा सकता है। देयर आर अ नंबर ऑफ ड्रग्स आजकल जो अवेलेबल हैं, जो हम ईज़िली इसको ट्रीट कर सकते हैं, बट हम, हाँ, इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन, that can remain for a long period of time, and but then it slowly goes away. तो ऐसा नहीं है, अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है लगाने वाले टैक्रोलिमस से और लगाने वाले स्टीरॉयड से, देन यू नीड टू सी योर डर्मेटोलॉजिस्ट। वो देखेंगे किस तरह की मेडिकेशन आपको सिस्टमिकली दी जाए, ओरली दी जाए, सो दैट वी कंट्रोल योर डिजीज बेटर। जी, बिल्कुल। अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना ना भूलें, क्योंकि इस तरीके से ऑनलाइन देखना या ऑनलाइन बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर पेशेंट की कंडीशन अलग-अलग होती है और जब तक उसे देखा ना जाए, उसे इवैल्यूएट ना किया जाए, बहुत मुश्किल है इस तरीके से बताना कि क्या हेल्प करेगा। लेकिन सर जैसे हमारे बहुत ही अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, वो इसके बारे में आपको गाइड कर सकते हैं और आप उनसे मिल सकते हैं। हम जानेंगे कुछ स्किन की बर्न्स के बारे में सर। जैसे हमने देखा है कि कई प्रकार के बर्न्स होते हैं, जिसमें सनबर्न भी एक ऐसा प्रॉब्लम कर सकता है हमारी स्किन के लिए। ये ऐसे रीजन्स में फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे सनलाइट बहुत ही हार्श होती है, वहाँ पे हो सकता है, या ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो कि सन ऑलमोस्ट हमारा 11 या 12 महीने हार्श रहता है, उन एरियाज़ में भी हो सकता है। तो स्किन के बर्न्स किस तरीके के होते हैं और सन से किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हमारे स्किन में? जनरली जो डार्कर स्किन्स होते हैं वो इतना बर्न होते नहीं हैं, बट येस, अगर बहुत ज़्यादा हार्श सन हो, फॉर एग्जांपल जैसे आपने बोला ट्रॉपिक्स में,
या फिर जब हम हाइट पे जाते हैं, इवन ऑन द हिल स्टेशंस, नॉर्मली हम सोचते हैं कि शायद यहाँ पे धूप इतना नुकसान नहीं पहुँचाएगी, बट इट इज़ इवन मोर हार्श बिकॉज वहाँ पे अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर, अल्ट्रावायलेट लाइट पार्ट ऑफ द सन इज़ व्हाट कॉजेज ऑल दीज बर्न्स। वहाँ पे यूवी लाइट ज़्यादा हार्श होती है सेवरल रीजंस की वजह से। एक तो उसको डिस्टेंस कम ट्रैवल करना पड़ता है टू रीच दैट प्लेस, ऑल्सो वहाँ पोल्यूशन वगैरह कम होती है, तो यूवी लाइट पेनिट्रेट्स बेटर। सो हिल स्टेशंस पे प्लीज़ आप ध्यान रखें, हिल स्टेशंस पे, क्योंकि आप ठंड भी होती है तो पीपल टेंड टू गो आउट इन सन। प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन विद wearing a good sunscreen on the in the at the hill stations, as well as when you are on the beach, and sometimes you are on a snowy area। वहाँ पे हम सोचते हैं इतनी ठंड है, क्लाउडी है, बट जो सन का लाइट का रिफ्लेक्शन आता है from the reflecting surfaces like from snow, that can be even more harsh, can cause a lot of damage। So सन स्क्रीन्स का बड़ा इंपॉर्टेंस बढ़ता है, और आजकल सन स्क्रीन्स बहुत बहुत प्रकार के आए हुए हैं। वी हैव वेरी ब्रॉड सनस्क्रीन्स अवेलेबल, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन्स अवेलेबल, जो अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड लाइट, ये सारी लाइट्स के अगेंस्ट हमारे को प्रोटेक्ट करता है, एंड दे गिव अस वेरी गुड प्रोटेक्शन। बट सनस्क्रीन्स के साथ ये ज़रूरी जानना है कि इनको हमें फ्रीक्वेंटली लगाना पड़ता है, बिकॉज देयर इफेक्ट डज नॉट लास्ट फॉर मोर देन 2-3 hours। No matter what the companies say that this will last you long, it's a long lasting sunscreen, but sunscreen effect doesn't last for more than 3 hours। So if you are in sun continuously और आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन चाहिए, पर्टिकुलरली अगर आप सेंसिटिव हैं, आपको रैशेस होते हैं, आपको सनबर्न्स होते हैं, तो every 3 hours you need to apply your sunscreen। And also people who have problems related to sun can have problems through the lights that they have in their homes also. Even the computer screen, even the phone screen, emits lots of ultraviolet light, so such people need to wear a sunscreen throughout the day, even if they are at home। So sunscreens का importance बहुत बढ़ जाता है। सॉरी, माय माइक वाज म्यूटेड एक्चुअली। Yeah. सनस्क्रीन्स के बारे में हमने बात की सर। हम देखते हैं कि हर सनस्क्रीन पे जो है सन प्रोटेक्शन फैक्टर लिखा हुआ होता है। तो सबसे अच्छा जो एसपीएफ फैक्टर है वो किस लेवल का होता है? किस लेवल का सनस्क्रीन हमें डेली रूटीन में यूज़ करना चाहिए, या अगर हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे सन बहुत ही हार्श होगा, तो क्या ये डिफरेंस होना चाहिए, या एक ही सनस्क्रीन हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं? एसपीएफ जो होता है, जो आपने सन प्रोटेक्शन फैक्टर बोला, वो एक ही एस्पेक्ट होता है एक सनस्क्रीन का। वो हमारे को प्रोटेक्शन बताता है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट बी लाइट ओनली, बट सन की रेज में उसके अलावा बहुत सारी रेज होती हैं जो हमारे स्किन को डैमेज कर सकती हैं। अल्ट्रावायलेट ए, जिसका कि उस पर जिक्र नहीं है एसपीएफ में, फिर विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड रेज, ये सारी डैमेज कर सकती हैं। सो जस्ट हैविंग ए सनस्क्रीन जिसका एसपीएफ बहुत हो डजंट मैटर। एक्चुअली a sun protection factor of 30 is more than enough. It gives you 95% protection from sunlight। और अगर आप उसको 50 पे 60 पे ले जाते हो, आपको another 2 या 3% protection अल्ट्रावायलेट बी से मिलती है, अल्ट्रावायलेट ए से मिलती ही नहीं है। अल्ट्रावायलेट ए प्रोटेक्शन के लिए हमें उसमें पीए रेटिंग देखनी पड़ती है। सो व्हेन यू लुक एट द सनस्क्रीन, उस पे एसपीएफ देखिए 30+ है तो इट्स गुड इनफ। फिर देखिए पीए फैक्टर क्या है, उसमें 3++, 4+ है, विच शोज यू कि अल्ट्रावायलेट ए से कितना प्रोटेक्शन है। फिर देखिए उसमें क्रिटिकल वेव लेंथ क्या है, अगर वो ज़्यादा क्रिटिकल वेव लेंथ है दैट मीन्स इट कवर्स मोर ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। फिर देखिए वो इंफ्रारेड प्रोटेक्शन दे रहा है कि नहीं, विजिबल लाइट प्रोटेक्शन दे रहा है कि नहीं, ये सब फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। देन यू हैव टू सी उसकी एस्थेटिक अपील कैसी है व्हेन यू अप्लाई द सनस्क्रीन, वेदर इट इज easily applicable and easily acceptable to the skin। अगर आप एक ऐसा सनस्क्रीन लेते हैं जो आपको ऑयली लगता है, थिक लगता है, आप उसको लगाएंगे नहीं, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। And also when the SPF of the sunscreen increases, it does not increase the protection as much as it increases the thickness and unacceptability। So do not look at a very high SPF, look at a moderate SPF of 30 to 40, look at the PA rating, look at infrared protection, look at visible protection, and look at the
non-comedogenicity. So they call them non-comedogenic, which are light sunscreens which can be easily worn for a long period of time, are not thick, will not induce acne. So all these factors are to be taken into consideration, not just the SPF. Absolutely. This discussion is becoming all the more important because it's so important for our daily life कि इसके अगर 3-4 एपिसोड्स भी बनाए जाएँ तो वो कम है। एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूँगी मैं। अक्सर हमने देखा है कि छोटी एज से ही हमें ये लाइफ़स्टाइल चेंजेस लाने चाहिए ऑफ कोर्स, बच्चों को जंक फूड नहीं खाने देना चाहिए। इसी के साथ क्या सनस्क्रीन बच्चों को भी लगाना चाहिए और किस एज से ये हमें शुरू करना चाहिए? देखिए, अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी रिकमेंड करती है कि सबको सनस्क्रीन लगाना चाहिए राइट फ्रॉम चाइल्डहुड। दे से दैट जो डैमेज अल्टीमेटली सन की वजह से होता है, इट्स नॉट अक्यूट कि आप सन में निकले आपको डैमेज होगी, इट्स क्यूमुलेटिव, इट इज क्यूमुलेटिव। आज अगर आपको 0.1% डैमेज हो गई, आपको कल 0.1 होगी, परसों 0.1 होगी, दीज 0.1s विल एड अप। बाय द एज यू आर 40-50 you would have enough cumulative sun damage which will cause long term problems. अब वेस्टर्न स्किन्स में तो कैंसर्स एक्सेट्रा होते हैं, हमारी स्किन्स में there'll be dark spots, there'll be aging spots, there'll be wrinkling etc happening early. So they say for all types of skins, they say, not only because they have dark skins also, they have the blacks also in America. So the American Association of Dermatology recommends use of sunscreens for all types of skins right from childhood. And agar isko properly right from childhood use kiya jaye throughout life, then they say that there is an 80% reduction in sun related skin diseases including cancers. So now they recommend use of sunscreens in all age groups and all skin types right from childhood and राइट, throughout. वेरी वेल सेड। स्वप्ना जैन जी इससे रिलेटेड सवाल पूछती हैं, काफ़ी डायरेक्ट सवाल है कि आपके अकॉर्डिंग बेस्ट सनस्क्रीन इंडिया में इस समय कौन-सा है? आई वोंट बी एबल टू नेम। मैंने इतना अच्छा आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया। आप एक सनस्क्रीन उठाइए, उसको देखिए, आपका एसपीएफ है, इज इट 30+, दैट इज डन। आप उसको पीए स्टार रेटिंग देखिए, इफ इट इज +3 एंड अबव, डन। इफ इट इज इन एडिशन गिविंग यू IR प्रोटेक्शन, वंडरफुल। इफ इट इज नॉन कॉमेडोजेनिक, बेस्ट। सो ये कॉम्बिनेशन लेके उठाइए आप अपना, और उसमें देखिए बेस्ट प्राइस में कौन सा मिल रहा है, वो ले लीजिए। जी, So बिल्कुल। I won't सारे name any. पॉइंट्स Yeah, जी, I think you are intelligent enough. Go to the market, pick up a sunscreen, and look at all these factors. राइट, वेरी वेल सेड सर। बर्न्स के बारे में हमने बात कही थी। सो फर्स्ट, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री बर्न्स ये क्या होता है? और काफ़ी डेवास्टेटिंग होता है अनफॉर्चुनेटली, एक्सीडेंटल बर्न्स ठीक हो जाते हैं। और इसका जो प्रिवेंशन है वो तो हम सब जानते हैं कि घरों में दिवाली के टाइम पे हमें काफ़ी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इसके अलावा बर्न्स अगर होते हैं तो क्या हो सकता है एक व्यक्ति में? Now this is beyond the domain of a dermatologist. Generally plastic surgeons dekhte hain more severe burns, but yes, first degree burn, second degree burn, third degree burns are the depths of injury that happen in the skin. A first degree burn will heal with only a mild superficial textural abnormality. A second, third degree burn can be detrimental in the sense कि हीलिंग में ही प्रॉब्लम आ सकती है, एंड बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एक्सेट्रा, लॉस ऑफ फ्लूइड्स एक्सेट्रा। और उसके अगर अगर वो परसेंटेज ऑफ बॉडी इन्वॉल्वमेंट हाई है तो इट कैन बी फेटल ऑल्सो। सो although we don't deal with burns as such, but that's how we classify burns. And third degree burns, of course, if a higher percentage of body is involved, can be detrimental and can be fatal also. राइट। एक अच्छी स्किन केयर रूटीन आपके अकॉर्डिंग क्या है? प्रॉपर क्लेंजिंग, यूजली विद नॉट अ वेरी हार्श क्लेंजर। जैसे हम सोचते हैं कि यहाँ बहुत गंदगी है, बहुत पोल्यूशन है, तो यूज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक वॉश। They are usually very harsh and they can damage the skin. So don't use things like Dettol, Savalon, etc. Not only on your face but also on your hands, unless it is specifically specified by your doctor. Do not use it just because you think that environment is dirty or COVID is around. Use a mild cleanser.
particularly face ke liye you have to be careful. Use white soaps or use there are mild cleansers available, cetyl alcohols, etc., containing washes which are very mild, paraffin containing washes, very mild. They leave some moisture on the face. They do not dehydrate the face, they do not irritate the face. So one is that. Also remember that you have to moisturize your skin, because every time you wash your skin with water only, also you will wash off some of the natural moisturizing factors that are in the skin. So you need to replenish that moisture back, particularly if you are doing this very frequently, for example hand washing very frequent these days. So a little mild moisturizer after every wash is a good practice that you can maintain. So this is basic, like cleanse properly with a proper cleanser, and moisturize every time you cleanse. Then beyond that we go to, if there is there are diseases, there are conditions, then we give them medication for that. But basic is mild cleansing and moisturizing. That goes a long way. And also sun protection, that goes a long way Right. in maintaining healthy skin, and preventing damage, disease, etc. राइट, वेरी वेल सेड। क्या बच्चों में भी हम ये क्लेंजर्स यूज़ कर सकते हैं और हर एज ग्रुप के लिए सोप यूज़ करना ठीक रहता है फेस के ऊपर? जी हाँ, माइल्ड क्लेंजर तो is used in all the age groups, and you need to cleanse. You see, you need to cleanse. It's not that you don't have to use a soap. Soap use करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके स्किन पे बहुत सारी pollution, dirt, grime, oil, ये सब collect होता है, and they can cause damage to the skin. So राइट, wash your skin, but don't wash it harshly. Wash it with a mild cleanser, and moisturize it. These two things, and protect from sun exposure, protect from environmental detrimental things like pollution, etc. That takes good care of the skin, basic care of the skin. हाउ इम्पोर्टेंट इज़ वाटर फॉर स्किन हेल्थ? Extremely important. A dehydrated skin is a very unhealthy skin. So when we give any treatment for any disease, one important part is hydration of the skin. So although we provide hydration from outside, we give them good moisturizers that will maintain the moisture in the skin and keep the skin supple. But if you are not taking enough water, that also leads to less hydration of the skin, which can add to the unhealthiness of the skin. So to maintain good health of the skin, not only do you have to apply the moisturizers, you also have to maintain a good hydration of the body, which is taking a proper recommended amount of fluids orally also. राइट सर, स्किन के बारे में एक लास्ट सवाल मैं पूछूंगी, उसके बाद 2-3 सवाल मैं पूछूंगी बिकॉज़ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम अबाउट हेयर हेल्थ। सो there are many conditions which lead to hyperpigmentation, more common in females especially, we have seen. So what are the commonest causes which cause hyperpigmentation, and how to deal with this hyperpigmentation on our own level? I'm not talking about the ones which need to be shown to a doctor. And how can lasers help if somebody is very, very conscious of these pigments on their skin? See, pigmentation is of several types. One pigmentation is if something like an inflammation has happened in the skin, acne has happened, some disease has happened, that will heal and cause a little bit of trauma to the epidermis and lead to development of pigmentation there. So that is a secondary pigmentation because of an inflammatory disease. Then there are primary, pigmentations, like we have melasma. मेलाज्मा एज ए पिगमेंटेशन इन इट सेल्फ, उसके लिए कोई इन्फ्लेमेशन होने की ज़रूरत नहीं है. सो मेलाज्मा जो होता है, या झाइयाँ जिनको बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, दिस यूजुअली इज हार्मोनली मीडिएटेड, genetically mediated. People who have genetic predisposition, and then the hormonal changes of pregnancy, hormonal changes of menopause, and then the sun is a very important part, important factor in the development of hyperpigmentation of the skin.
all hyperpigmentations get aggravated by sun. So sun protection becomes the most important part of your treatment or prevention of pigmentary disorders. So you as a common man, before reaching a doctor, at least can protect yourself from sun by using a very good broad spectrum sunscreen that I've already told you. उसमें SPF इतना important नहीं है, उसमें PA factor ज़्यादा important है, because it's ultraviolet A light that causes pigmentation. So उसमें वो चीज़ें देखिए, और सनस्क्रीन एवरी 3 आवर्स लगाइए, हेल्दी स्किन मेंटेन करिए, मॉइस्चराइज स्किन रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, सन से प्रोटेक्टेड रहिए. दैट्स व्हाट यू कैन डू शॉर्ट ऑफ गोइंग टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट. बट बियॉन्ड दैट, ऑफ कोर्स, यू नीड टू सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट फॉर ट्रीटिंग योर पिगमेंटेशन. Right, sir. Do lasers help in these melasma and conditions which are of non-inflammatory nature? A number of conditions do very well with lasers. We have Q switch lasers for treating pigmentary disorders, but melasma per se is not a very good condition to be treated with lasers. So we keep lasers as the last choice for melasma. Generally, the patients go to these, beauty clinics, and they are Yeah. that's the first thing they are told, that melasma, we have a laser, so we can do it on your melasma. So melasma lasers have to be kept as the last resort. We use lasers very, very carefully in melasma, only in those melasmas who have not responded to medical treatment, to chemical peels, to oral and topical medications, etc. Then we go to lasers, and this is usually reserved for melasmas which are deep down in the skin, in the deeper dermis. Only for those where we have to reach down, because the problem is, if you use lasers, there's every possibility of the disease coming back, and in a more fierce manner. So you have to be very careful using a laser. We have to use very mild parameters. We have to follow up with the proper medication thereafter and maintenance thereafter. So just doing a laser doesn't work. It has to be done very, very meticulously and carefully. There's a very skeptical decision to be taken in patients of melasma, which only a doctor should take. These beauty clinics, etc., they spoil these patients using Right. lasers all over the place. And patients spend a lot of money in the beauty clinics because they are asked to come again and again for several sittings. So they should definitely see a dermatologist, because they have to let somebody touch their skin, which is a very, very vital organ. And lasers sometimes can cause burns, unfortunately, if not used appropriately and under medical supervision. Please keep these things in mind and consult a dermatologist before you plan any kind of treatment for your skin. समथिंग अबाउट द हेयर हेल्थ, क्योंकि स्किन जो है हमारी हेयर हेल्थ के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. हमारी स्कैल्प की जो स्किन है, यदि अगर वो हेल्दी ना हो तो हेयर स्ट्रैंड्स भी हेल्दी नहीं होंगे. तो हेयर हेल्थ के लिए हम जनरली क्या कर सकते हैं, और हमारे मेन जो मेल फोक हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका सबसे कॉमनेस्ट सवाल यही होता है कि जो हेयर स्ट्रैंड्स वो लूज़ करते हैं, ट्रांसप्लांट किस तरीके से उनको हेल्प करता है, या कैसे लोगों को ट्रांसप्लांट जो है हेयर ट्रांसप्लांट हेल्प कर सकता है. देखिए, हेयर हेल्थ मेंटेन करने के लिए एक हेल्दी स्कैल्प होना ज़रूरी है, एज यू सेड. सो डैंड्रफ, ऑयल, एक्सेट्रा इन द स्कैल्प शुड बी ट्रीटेड प्रॉपर्ली. तो हम जिन लोगों के डैंड्रफ रहता है, या डैंड्रफ की वजह से थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन स्किन में रहता है, विच इज़ कॉल्ड सेबोरिक डर्मेटाइटिस, उसको ट्रीट करना ज़रूरी है. तो such people should use anti-dandruff shampoos, keep their scalp clean, apply medications if they need to. In spite of that, most of the people who lose their hair actually lose it because of the genetic predisposition. तो उनको male pattern baldness होती है, जो हम बोलते हैं. Otherwise there are acute causes of hair loss also, जैसे कोविड के बाद बहुत बहुत कॉमन लॉस होता है, बट यूजली वो सेल्फ लिमिटिंग होता है और वो रुक जाता है और वापस भी आ जाते हैं बाल. बट जो प्रोग्रेसिव होता है वो यही मेल पैटर्न बॉल्डनेस और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, ये जेनेटिक होता है, और ये एंड्रोजेंस जो हमारे मेल हार्मोन्स होते हैं उनकी ओवर एक्टिविटी से या उनकी एक्शन स्किन पे ज़्यादा होने की वजह से होता है, और ये प्रोग्रेसिव होता है. इसको ट्रीट किया जा सकता है, थोड़ा रिवर्स किया जा सकता है दवाइयों के मदद से, और मगर इसको मेंटेन लाइफ लॉन्ग करना पड़ता है. इफ यू स्टॉप योर मेडिकेशन, देन यू विल स्टार्ट लूजिंग योर हेयर
again, and you'll reach where you had started from. So take your treatment properly and follow it very, very meticulously for long periods of years and decades. You have to use it. मगर एक बार अगर बॉल्डनेस हो जाए पूरी और हेयर बिल्कुल मिनिचराइज हो जाए, उसके बाद ट्रांसप्लांट किया जाता है. ट्रांसप्लांट इज अ वेरी वेरी नाइस प्रोसीजर एंड वेरी ग्रेटिफाइंग प्रोसीजर दैट हैज कम अप रिसेंटली. इसमें जो हमारे नॉन हार्मोन डिपेंडेंट हेयर्स होते हैं सर के पीछे, दे आर नॉन हार्मोन डिपेंडेंट, यू विल नेवर लूज देम. हार्मोन्स की वजह से अगर आपने कोई बुढ़े से बुढ़ा आदमी भी देखा हो, कोई बुजुर्ग से बुजुर्ग आदमी भी देखा हो, उनके बाल सारे सेंटर से चले जाते हैं, बट they maintain their hair over here. You see people in 80s 90s, they will have hair here. So these hair are not destined to be lost. तो इन हेयर्स को निकाल के इस एरिया में लगाया जाता है और वहाँ वो अपना जेनेटिक जो उनका मेकअप होता है वो मेंटेन करते हैं. दे मेंटेन इट. सो दोज हेयर्स आर ट्रांसफर्ड, दे मेंटेन द नॉन एंड्रोजन डिपेंडेंट नेचर देयर ऑल्सो, और वो बचे रहते हैं. वेरी ग्रेटिफाइंग प्रोसीजर. इफ इट इज डन प्रॉपर्ली, पीपल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स विद हेयर ट्रांसप्लांट. वेरी वेल सेड सर. आज का हमारा डिस्कशन अधूरा रहा क्योंकि सब लोग, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस तरह से कह रहे हैं, आई वॉच एवरी एपिसोड ऑफ मेड टॉक्स, बट दिस शो टिल नाउ इज वन ऑफ द बेस्ट, and today's guest is really really good. We thank you, team Med Talks, for bringing all this together, because I also understand this 1 hour is not sufficient to solve so many queries related to skin and hair, sir. We will definitely call you here again to know something more about hair and skin health. छोटे शब्दों में, छोटे सेंटेंसेस में प्लीज हमारे सब लोगों को बताइए कि सिंपल हेयर के रूटीन में क्या करना चाहिए. जैसे आपने स्किन के लिए बहुत ही अच्छी 3 चीजें बताई, हेयर के लिए भी 3-4 चीजें हमें बता दीजिए. मेंटेन गुड हेल्थ हाइजीन. बालों को साफ रखिए, फ्रीक्वेंटली वॉश करिए, जितना फ्रीक्वेंट ज़रूरत पड़े. जैसे कई बार हम सोचते हैं कि ज़्यादा शैम्पू, रोज़ शैम्पू नहीं करना चाहिए, शैम्पू हफ्ते में एक बार करना चाहिए. नहीं, वॉश योर हेयर एज फ्रीक्वेंटली एज यू रिक्वायर. इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. तो जितना ऑयल प्रोडक्शन होता है, जिस तरह से उनका काम होता है, जो लोग बाहर पोल्यूशन में घूमते हैं, उनको शायद ज़रूरी है रोज़ शैम्पू करना. एंड इट्स बेटर टू यूज़ अ शैम्पू रादर देन अ सोप ऑन योर स्कैल्प, बिकॉज शैम्पूज आर मेंट टू cleanse delicately and mildly. And also जो frequently शैम्पू करते हैं, शैम्पूज थोड़ा सा हेयर को ड्राई कर सकते हैं, तो उसके बाद ओकेजनली और मे बी ट्वाइस अ वीक यू शुड कंडीशन योर हेयर. उनको हेयर को कंडीशनर लगाइए, 5 मिनट लगे रहने दीजिए, देन वॉश इट. सो हेयर और स्कैल्प को साफ रखिए. बालों में तेल लगाना इतना ज़रूरी नहीं होता है. बालों की लेंथ पे लगा सकते हैं, जड़ों में लगाना इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस. वी जनरली बिलीव कि बालों में तेल लगाने से बालों की स्ट्रेंथ बढ़ती है, बालों का हेल्थ अच्छा होता है. दैट्स नॉट राइट. हमारे बालों का ऑलरेडी ऑयल ग्लैंड अटैच्ड होता है. ईच हेयर हैज़ अ ऑयल ग्लैंड अटैच्ड विद इट. वी डोंट नीड एक्सटर्नल ऑयल एट ऑल. बट हाँ, आप हेयर की कंडीशनिंग के लिए, particularly the ladies for the lengthy hair, can use oil on the length of the hair. Keep it clean, keep it conditioned. You can oil it before washing, particularly the long hairs in women. That way you can maintain a good healthy hair. बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लोगों का पेट नहीं भरेगा क्योंकि जैसे मैंने कहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप हमें बता रहे हैं. आपका फील्ड इतना इंटरेस्टिंग है. लोग पूछ रहे हैं अंडर आई पिगमेंटेशन के लिए कुछ शब्द प्लीज हमें बता दीजिए. देखिए, अंडर आई पिगमेंटेशन जो है एक ये जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड कंडीशन होती है. जिन लोगों की फैमिलीज में रन करता है, जनरली उन्हीं को होता है. बट देन environmental conditions like stress, too much of computers, too much of exposure to sunlight, disease, all these things can aggravate deficiencies, anemia, etc. All these can aggravate under eye pigmentation. कई बार under eye पिगमेंटेशन नहीं होती है. इट इज़ जस्ट दैट दे हैव हॉलोनेस अंडर देयर आईज. इनको टीयर ट्रफ बोलते हैं. तो जो हम डार्क सर्कल्स बोलते हैं, तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट असेस कर सकता है कि वो डार्क सर्कल्स एक्चुअली डार्क हैं, कि हॉलोनेस है, कि नीचे कई बार ब्लड वेसल्स होते हैं जो प्रोमिनेंट होते हैं, कि वो है.
स्किन की इलास्टिसिटी कम है, सो देयर कैन बी नंबर ऑफ थिंग्स दैट कैन लीड टू डार्कनेस अराउंड द आईज. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट हम ट्रीटमेंट देते हैं. अगर पिगमेंटेशन है तो हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ केमिकल पील्स करते हैं, अब लेजर्स भी यूज़ करते हैं, बट अ वेरी डिफिकल्ट कंडीशन टू ट्रीट. अगर हॉलोनेस है तो आजकल हम फिलर्स देते हैं आँख के नीचे, जिससे वो आँख के नीचे जो हॉलोनेस है वो भर जाती है, तो शैडो नहीं गिरती है ऊपर वाले आईब्रोज की उसके ऊपर, सो उससे वो डार्क दिखता नहीं है. सो नंबर ऑफ वेज टू ट्रीट इट, बट एज फार एज बिफोर रीचिंग अ डॉक्टर, maintain again a healthy lifestyle, moisturize your face as a whole and also the under eyes properly, and use mild cleansers, and beyond that go थैंक to यू your सो doctor. मच सर, बहुत मज़ा आया आपके साथ कन्वर्सेशन में. ये सेशन तो यहाँ एंड हो रहा है, लेकिन मैं जल्द ही आपको फिर से इस शो पे लेके आऊँगी, क्योंकि मेरा भी मन जो है वो नहीं भरा. बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं मन में स्किन और हेयर हेल्थ से रिलेटेड. We'll call you again on this show. Thank you so much for sparing your important moments with us today here this evening. And we have a very small token of appreciation which Mr. Prateek, he has been associated with us. We thank him for his all of his assistance throughout the show. And this is a certificate which is for you, sir. And your already decorated cap, but this is a small token. Please accept it from us. Thank you so much for coming here and enlightening us. Thank you very much, Dr. Vinny. It was such a pleasure to be with you. Thank you. थैंक यू. एंड जय हिंद एवरीवन. आप फिक्र नहीं करिए, मुझे पता है कि बहुत सारे जो सवाल हैं आपके मन में भी रह गए, और कुछ बिना पूछे मैं सर को जरूर पकड़ के लाऊंगी, और स्किन से रिलेटेड हेल्थ के बारे में हम उनसे दोबारा बात करेंगे. जय हिंद एवरीवन. हैव अ नाइस इवनिंग. Okay, bye bye.